संत कवि रैदास का जन्म काशी के पास गांव में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहा जाता है कि उस दिन रविवार था, इसलिए नवजात शिशु का नाम रविदास रखा गया, जो बोलचाल की भाषा में रहदास या रैदास हो गया। स्वामी रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों में महान संत कबीर के साथ संत कवि रैदास का नाम भी बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। रैदास एक चर्मकार परिवार में पैदा हुए थे। नगर के बाहर ही सड़क के किनारे उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। यहाँ रहकर वे भगवान की भक्ति करते, भजन गाते और आजीविका के लिए जूते बनाते या उनकी मरम्मत करते। उनके पास भगवान की एक सुंदर चतुर्भुजी मूर्ति थी जिसे वे हमेशा अपने पास रखते थे। एक किंवदंती के अनुसार रैदास के पड़ोस में एक पंडित था। वह भगवान की चतुर्भुजी मूर्ति को प्राप्त करना चाहता था। उसने रैदास से कहा, तुम हमेशा चमड़े का काम करते हो, तुमसे इस मूर्ति की सेवा पूजा ठीक से नहीं हो रही है और नहीं हो सकती है, इसलिए इसे मुझे दे दो। रैदास बोले, पंडित, तुम केवल नाम के पंडित हो, तुम भक्ति भावना से पूजा नहीं करते, इसीलिए यह मूर्ति तुम्हारे पास नहीं रह सकती। रैदास की बात पंडित को बुरी लगी। वह स्थानीय राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, आपके राज्य में अधर्म हो रहा है। देखिए, रैदास जैसे लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। यदि यह चलता रहा तो आपके राज्य पर संकट आ सकता है। पंडित की बात सुनकर राजा ने रैदास को मूर्ति के साथ दरबार में बुलाया और कहा, रैदास, तुम यह मूर्ति इस पंडित को क्यों नहीं दे देते? राजा की बात सुनकर रैदास ने अपनी मूर्ति को सबके सामने रख दिया और कहा, महाराज, यदि यह पंडित भगवान का सच्चा भक्त है तो यह अपने भक्तिभाव या तंत्र मंत्र से मूर्ति को अपने पास बुला ले। रैदास की बात सुनकर पंडित ने कई मंत्र पढ़े और भजन गाए, परंतु मूर्ति जरा भी न हिली। तब राजा ने कहा, अच्छा रैदास, अब तुम बुलाओ मूर्ति को अपने पास। रैदास ने सबके सामने भक्ति भाव से भजन गाया, नरहरि चंचल है मति मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। जैसे ही रैदास का भजन पूरा हुआ, वह मूर्ति उछलकर रैदास की गोद में आ गिरी। यह देखकर पंडित तो दरबार छोड़कर भाग गया। राजा ने रैदास के चरण पकड़ लिए और वे उनके शिष्य बन गए। एक बार एक सेठ रैदास के पास अपने जूते सिलवाने के लिए आया। वह गंगा स्नान के लिए जा रहा था। बातों ही बातों में सेठ ने रैदास से भी गंगा स्नान के लिए चलने को कहा तो रैदास ने कहा, सेठ जी, आप जाइए, हम गरीब लोगों के लिए तो हमारा काम ही गंगा स्नान है। रैदास की बातें सुनकर सेठ बोला, तुम्हारा उद्धार भला कैसे हो सकता है? तुम तो हमेशा काम में ही लगे रहते हो, कभी कोई धर्म कर्म भी किया करो। रैदास ने अपनी जेब से एक सुपारी निकाली और कहा, सेठ जी, आप तो गंगा स्नान के लिए जा ही रहे हैं, कृपया आप मेरी यह सुपारी भी ले जाएं और गंगा मैया को भेंट कर दें। परंतु याद रखिए, अगर गंगा मैया हाथ फैलाकर मेरी सुपारी ले तभी भेंट कीजिए, नहीं तो मेरी सुपारी लौटा लाइए। सेठ ने रैदास से उसकी सुपारी तो ले ली, परंतु मन ही मन रैदास का मजाक बनाने लगा। दूसरे दिन सेठ ने गंगा स्नान के लिए प्रस्थान किया। गंगा जी की पूजा के बाद उसे रैदास की सुपारी की याद आई। उसने गंगा मैया से कहा, हे गंगा मैया, आप हाथ फैलाए तो मैं आपको रैदास की सुपारी भेंट करूं। तभी एक चमत्कार हुआ। गंगा मैया ने हाथ फैलाकर रैदास की सुपारी स्वीकार की और उसके बदले में एक स्वर्ण कंकण दिया और कहा, यह मेरे प्रिय भक्त रैदास को दे देना। यह सब देख सुनकर सेठ आश्चर्यचकित हो गया। वह जब लौट रहा था तब उसने सोचा कि इस स्वर्ण कंकण का रैदास क्या करेगा। यदि मैं इसे राजा को भेंट करूं तो बहुत सा धन पुरस्कार स्वरूप मिल सकता है। इसलिए वह सीधा राजभवन गया। राजा को स्वर्ण कंकण भेंट कर पुरस्कार प्राप्त किया और घर लौट आया। राजा ने वह कंकण अपनी रानी को दिया। रानी ने कहा,
कंकण तो अद्वितीय है, परंतु इसका जोड़ा होना चाहिए। राजा ने सेठ को बुलाया और कहा, एक कंकण तो पहना नहीं जा सकता, इसलिए ऐसा ही एक कंकण और लेकर आइए। राजा की बात सुनकर सेठ के तो होश उड़ गए। वह वहां से सीधा रैदास के पास आया और सारी कहानी सुनाकर कहने लगा, भैया, अब तुम ही मेरी जान बचा सकते हो। तुम मेरे साथ गंगा घाट पर चलो और गंगा मैया से वैसा ही दूसरा कंकण मांग कर लाओ। सेठ की बातें सुनकर रैदास हंसे और फिर बोले, देखो सेठ, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि मन शुद्ध है और भक्ति भाव सच्चा है तो मेरी इस कठौती में भी गंगा मैया प्रकट हो सकती हैं। वे गंगा मैया की स्तुति करने लगे। कुछ ही क्षणों में रैदास की कठौती में गंगा मैया प्रकट हो गईं। उन्होंने एक और स्वर्ण कंकण रैदास को दिया और अदृश्य हो गईं। यह देखकर सेठ ने रैदास के चरण पकड़ लिए और कहा, रैदास, मुझे क्षमा करना। मैं तो आपको केवल एक चर्मकार ही मानता था, परंतु आप तो संत हैं, सच्चे भक्त हैं। आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। रैदास की भक्ति से ही यह कहावत प्रचलित है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ है परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि मन शुद्ध है तो उसके दर्शन कहीं भी हो सकते हैं। Saint poet Raidas was born on the full moon day of Magh in a village near Kashi. It is said that day was a Sunday, so the newborn was named Ravidas, which became colloquially Raidas or Raidas. Among the 12 chief disciples of Swami Ramanand, Saint poet Raidas's name is revered with great reverence, along with the great Saint Kabir. Raidas was born into a family of leather workers. He built a small hut on the roadside outside the city. Living there, he worshipped God, sang hymns, and made or repaired shoes for a living. He possessed a beautiful four-armed idol of the Lord, which he always kept with him. According to a legend, a Pandit in Raidas's neighborhood desired to acquire the four-armed idol of the Lord. He told Raidas, "You always work with leather. You cannot and cannot properly serve this idol. So give it to me." Raidas said, "Pandit, you are a Pandit in name only. You do not worship with devotion. That is why this idol cannot remain with you." The Pandit was offended by Raidas's words. He went to the local king and said, "Your Majesty, there is injustice happening in your kingdom. Look, people like Raidas are worshipping God. If this continues, your kingdom could be in danger." Hearing the Pandit's words, the king summoned Raidas to the court with the idol and said, "Raidas, why don't you give this idol to this Pandit?" Hearing the king's words, Raidas placed his idol in front of everyone and said, "Your Majesty, if this Pandit is a true devotee of God, he should call the idol to himself through his devotion or through tantramantra." Hearing Raidas's words, the Pandit recited several mantras and sang hymns, but the idol did not move at all. Then the king said, "Okay, Raidas, now you call the idol to yourself." Raidas sang a devotional hymn in front of everyone, "Narhari, my mind is fickle, how can I worship you?" As soon as Raidas's hymn was completed, the idol jumped and fell into Raidas's lap. Seeing this, the Pandit fled from the court. The king held Raidas's feet and became his disciple. Once, a businessman came to Raidas to get his shoes repaired. He was going to bathe in the Ganges. During the conversation, the businessman asked Raidas to accompany him to the Ganges. Raidas said, "Sethji, you go. For us poor people, bathing in the Ganges is our job." Hearing Raidas's words, the businessman said, "How can you be saved? You are always busy working,
should you also do some religious work? Raidas took a betel nut from his pocket and said, Sethji, you are going to bathe in the Ganges. Please take this betel nut of mine and offer it to Mother Ganga. But remember, only offer it if Mother Ganga extends her hand and accepts my betel nut, otherwise return it. The Seth accepted Raidas's betel nut but secretly mocked him. The next day, the Seth set out to bathe in the Ganges. After worshipping the Ganges, he remembered Raidas's betel nut. He said to Mother Ganga, O Mother Ganga, please extend your hand and I will offer you Raidas's betel nut. Then a miracle occurred. Mother Ganga accepted Raidas's betel nut with her outstretched hand and gave him a gold bracelet in return, saying, Give this to my beloved devotee, Raidas. The Seth was astonished by all this. As he was returning, he wondered what Raidas would do with this gold bracelet. If he presented it to the king, he could receive a considerable sum of money as a reward. So he went straight to the palace. He presented the gold bracelet to the king, received his reward, and returned home. The king gave the bracelet to his queen. The queen said, The bracelet is unique, but it needs a pair. The king called the merchant and said, Just one bracelet is impossible, so bring me another one like it. Hearing the king's words, the merchant was stunned. He went straight to Raidas and told him the whole story, saying, Brother, only you can save my life now. Come with me to the Ganges river and ask Mother Ganga for another bracelet just like it. Hearing the merchant's words, Raidas laughed and said, Look, Lord, there's no need to go anywhere. If your mind is pure and your devotion is true, Mother Ganga can appear in this pot of mine. He began to praise Mother Ganga. Within moments, Mother Ganga appeared in Raidas's pot. She gave Raidas another golden bracelet and disappeared. Seeing this, the merchant held Raidas's feet and said, Raidas, please forgive me. I used to think of you as just a tanner, but you are a saint. A true devotee. Please bless me and guide me. Raidas's devotion has given rise to the saying, Man chaga tu kathauti mein Ganga. It means that God is omnipresent. If the mind is pure, His vision can be found anywhere. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.